Bismillahirrahmanirrahim. SLOs of this lesson are recognize and demonstrate function and use of modal verbs learnt earlier. Dear students, I hope you are familiar with the use of modal verbs. We have modal verbs like can, could, be, able to, would, may, might, shall, should, would, etc. So, we will discuss in detail what are the modal verbs. A modal verb is a type of helping verb. Modal verbs are used to show something that is certain, probable or possible or not. We also use modal verbs to do things like talking about ability, asking permission, making requests and offers. Some modal verbs are can, could, be able to, would, may, might, shall, should, would, etc. The examples are Zuhaib can write poetry well. It shows an ability that Zuhaib can write poetry very well. Can क्या शो कर रहा है? Ability शो कर रहा है किसी एक्शन की कि वो क्या कर सकता है, लिख सकता है पोइट्री बहुत अच्छे तरीके से. एबिलिटी है, एबिलिटी को शो कर रहा है नाउन की. Naeem is able to solve complicated math equations. Again, it shows an ability to solve complicated math equations. The third one, when I was a child, I could climb trees. अब यहां पर क्या है? प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है कि जब मैं छोटा था तो क्या करता था, दरख्त चढ़ सकता. कुड क्या होगा आपका? कैन की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट में यूज होगा. द फोर्थ वन, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस आफ्टरनून. यहां पर अगेन पॉसिबिलिटी है कि शायद ये काम ना हो. आई विल नॉट बी एबल, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस आफ्टरनून. यहां पर वो कह रहा है कि मैं क्या नहीं हूंगा, आफ्टरनून में नहीं अवेलेबल हूंगा आपकी हेल्प करने के लिए. पॉसिबिलिटी है. लेट्स डिस्कस द मॉडल वर्ब सेपरेटली हियर. द यूज ऑफ कैन, एबिलिटी, डाउट, एस्टॉनिशमेंट, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट. इन सिचुएशंस में हम कैन का यूज कर सकते हैं. एबिलिटी मतलब जैसे कि आई कैन राइट वेल. डाउट, आई कुड डू दैट, मैं ये कर सकता था. एस्टॉनिशमेंट, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट. परमिशन, कैन आई डू दिस. पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम फॉर्मल सिचुएशन में किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट. इस तरह की सिचुएशंस कैन आपकी इन सिचुएशंस में यूज होगा. मे, परमिशन इफ नॉट, प्रोहिबिशन, सपोजिशन विद डाउट. जब आपको डाउट हो या आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करें या परमिशन मांगे किसी से, मे आई गो टू वाटर. आप कहते होंगे अपनी क्लास में अपनी टीचर को. फॉर्मल सिचुएशन है. फॉर्मल सिचुएशन में जब हम परमिशन किसी से लेते हैं तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ नॉट, प्रोहिबिशन या सपोजिशन, आप सपोज कर सकते हो. आई मे गो टू द मार्केट टुडे. हो सकता है कि मैं आज मार्केट चला जाऊं विद, या डाउट हो आपको कि ये एक्टिविटी होगी या नहीं होगी. इट्स नॉट कंफर्म, श्योर नहीं हो आप. और मस्ट क्या होगा? ऑब्लिगेशन, फर्म, नेसेसिटी, लॉजिकल कंक्लूजन, प्रोबेबिलिटी. आपको पक्का यकीन होगा कि ये होने वाला है. ऑब्लिगेशन आप पर फर्ज होगा, ऑब्लिगेटरी होगा. फर्म, नेसेसिटी, बहुत उस वक्त जरूरत होगी. जरूरत के तहत हम मस्ट, आई मस्ट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टुडे. मस्ट क्या है? अभी आपने जरूर जाना है. प्रोबेबिलिटी है. ऑब्लिगेशन जब आप पे आ जाता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं. शेल क्या होगा आपका? इंटेंशन या सपोजिशन. शेल अगेन आपका इंटेंशन है, इरादा करना है, सपोज करना है आपने. और ये याद रखिए कि शेल हमेशा आपका फॉर्मल में यूज होगा. फॉर्मल सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो शेल का. आई शेल गो टू द मार्केट टुडे. हो सकता है कि मैं चला जाऊं. इंटेंशन है, सपोजिशन है. विल क्या होगा आपका? विश, डिजायर, विल, कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में आप विश करते हो या डिजायर करते हो या प्रेडिक्ट करते हो कि मैं करूंगा, आई विल डू दिस. डिजायर होती है कि मैं ये करना चाहता हूं, या आपका कॉन्फिडेंस होता है कि आई विल, आपको पता होता है कि आई यू कैन डू दिस, तो आप जरूर करोगे ये काम. कॉन्फिडेंस होता है आपको. I will complete my homework. You have confidence in yourself. That's why you're saying that you can complete your homework. This one, the ought to, moral duty
insistent advice, strict recommendation. सजेशन में भी आ सकता है, रिकमेंडेशन में भी आ सकता है. You ought to service your car. स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन भी आ सकती है. इंसिस्ट, आप एडवाइस के वे में भी दे सकते हो, किसी को बोल सकते हो. मॉरल ड्यूटी भी हो सकती है कि यू ऑट टू डू दिस, यू ऑट नॉट टू टॉक टू योर मदर लाइक दिस. आपको अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी. मॉरल ड्यूटी में आ जाएगा आपकी. पोलाइट वे में आप किसी को एडवाइस कर सकते, सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंडेशन दे सकते हो. एंड द नीड, नेसेसिटी. सो इट कैन बी बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. यू नीड नॉट टू डू दिस और यू नीड टू डू दिस. नॉट में भी आ जाएगा और पॉजिटिव में भी आ जाएगा. नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ. और B2 आपका क्या आएगा? ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट. यू हैव टू बी केयरफुल. ये आपका हैव टू से रिलेटेड है. अनविलिंगनेस फॉर सर्कमस्टांसेस. जब आपको फोर्स कर दिया जाए किसी काम के लिए, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस. अनविलिंगनेस मतलब आप ना चाहते हुए भी कोई काम करो. एंड द वुड, विश, विच टू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड हैबिट ऑफ द पास्ट. Always remember that we use would in past and future both. Wish, which to like, I would like to have tea. In a formal situation, I would like to borrow this from you. Or a habit of the past, polite request हो गई आपकी. Would you talk to me for a minute? A habit of the past, I would have this, like that. And the should, necessity, advice, blame, recommendation, reproach and regret. Necessity, जब आपका कोई चीज करना लाजमी हो जाए या एडवाइस आप करें कि you should have do this, recommend करें you should complete that work, regret करें आप I shouldn't have done this, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, regret हो रहा है आपको, पछतावा हो रहा है. रिकमेंडेशन भी कर सकते हो, ब्लेम भी कर सकते हो, एडवाइस भी, नेसेसिटी जब जरूरत हो. एंड यूज टू, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. आई यूज टू बी सो मूडी इन द पास्ट. आई यूज टू सो टॉकेटिव. शी यूज टू कुक वेरी वेल. तो ये क्या है? रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट है. सो दीज आर द uses of modal verbs. In these situations, you can use the modal verbs. Now let's move to the exercise on page number 51 of your textbook. Choose the correct modal verb to complete the sentence below. You tell Anita about the party tomorrow night. It's a surprise. So, we have a strong emotion here too. The surprise emotion and you. Surprise है इधर, तो क्या है? Need to, doesn't have to or has to. ऑब्लिगेशन है कि आपने नहीं बताना ये सरप्राइज है नीता को. यू टेल नॉट अबाउट द पार्टी टुमारो नाइट. यस, इट्स वेरी ऑब्वियस. यू नीड टू टेल. नो, बिकॉज इट्स अ सरप्राइज. यू कांट टेल. डजंट हैव टू, हैज टू. यू हैज टू नो. हैज टू इज इनएप्रोप्रिएट. नीड टू inappropriate here and doesn't have to know. Yes, you must not tell. Obligatory है कि नहीं बताना है, लाजमी नहीं बताना है नीता को because it's a surprise. The must not is a right option here. The second one, Tina register for her classes on Monday, otherwise she won't get a place in them. टीना ने क्या करना है? रजिस्टर करना है मंडे को क्लासेस में, वरना उसको जगह नहीं मिलेगी क्लासेस में. टीना what? Tina should not to know. She has to. Yes, she has to. Tina has to register. वरना उसको जगह नहीं मिलेगी. There is a situation here. So, you can have a good idea of it. If you read the full sentence, you can choose the appropriate modal verb for each sentence. Yes, she has to. The negative ones are not appropriate here. Should not, must not, and doesn't have to. She has to register. The third one, you send it fax. I have already sent it. अब क्या कर दिया उसने? पहले सेंड कर दिया. वो उसको कह रहा है you send that fax. तुमने ये फैक्स भेजा. मैं पहले भेज चुका हूं. अगर वो पहले भेज चुका है तो उसको क्या कहेगा? You must send the fax. No, because you already sent it.
You will have to, you don't have to, or you can. Yes, you don't have to. The negative one here. Don't have to, you don't have to send that fax because I have already sent it. The fourth one here, a dog gets special training in order to be a guide dog. Dog को क्या है special training मिलनी चाहिए guide dog होने के लिए. So अब ये क्या है necessity है यहाँ पर. If you go through the modal verbs, the situation and read it, you can do this exercise very easily. A dog must get special training, or need to, or don't have to, or could. There is a necessity of getting special training. So the need to is the right option here. जरूरत है, a dog need to. Dog को क्या जरूरत है? Special training की, ताकि वो एक अच्छा guide dog बन सके. The fifth one, Junaid get up early tomorrow. His class was cancelled. Class is cancelled. The situation here is already for you. The class is cancelled. So why he has to get up early? Yes, Junaid doesn't have to get up early here. This is the right option here. Must not, obligatory नहीं है, don't need to नहीं है. Junaid should क्यों उठे जब class cancel हो गई है? So Junaid doesn't have to get up early tomorrow because his class was cancelled. The sixth one here, you get your teeth cleaned at least once a year. So this is a recommendation here, a suggestion here. So for suggestion, which modal verb we will choose here? The one with the negative is not appropriate. You will ought to is inappropriate. So you should get your teeth cleaned at least once a year. Is the right option here. Should. The seventh year, they finished the project on time. The main engineer is ill. We have a situation here. The main engineer is ill. So there is a supposition or doubt here. May as well no. May no, not the possibility in positive sense. We have to give in the negative sentence कि शायद वो अपना क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर सके टाइम पर क्योंकि मेन इंजीनियर क्या है इल है. So they might not is the right option here. I want you to choose the right options for these remaining sentences too. This is also your home task. We have modal verbs here in the box, in this box here. And you have to complete each sentence below with the modal verb from the word bank above. This is your word bank. Read it and add appropriate modal verb from this box here. In these 8 sentences, the blanks we have.